जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार हमको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए, सबके साथ मर्डर हो जाता है। Hello everyone, my name is Manasvi and welcome to the channel of Pahuja Law Academy. And today we are here to discuss on the topic the importance of legal reasoning for CLAT UG students. CLAT UG के एग्जाम में लीगल रीजनिंग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है एंड एज अ फ्रेशर जो कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं या 11th के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए लीगल सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज उनके लिए वो एक न्यू सब्जेक्ट भी होता है और इक्वली इम्पोर्टेंस रखता है एग्जाम में। तो उसकी क्लैरिटी होना एक important role play करता है in qualifying the NLUs. So for that matter, we don't need to have a very deep knowledge about all the legal provisions, but a fair understanding of the facts and the circumstances of all the legal provisions, and accordingly the paper could be solved and we can expect a good ranking in the NLUs. Further, we really need to have the command on the judgments. As many judgments we will read, we will be able to have a clear understanding of the legal provisions, which will again help us in cracking a good position in NLU. Thank you. Subscribe for more content.